entries will be accepted till uh, further 2 more days, and the final entries could be submitted after that 2 more days, and final competition will be held on 27th. So moving on, a semester you will thank for. So this competition, we visualize this competition as the one where all the participants shall be exhausted to that level where their knowledge, their interests will be tested to that extent, which would be equivalent to whatever they have gone through a semester. Because practical application of your skills is what matters into the real life, into the real jobs, and that's what we are doing here. Many of the finance graduates, many of the MBA graduates have participated in this competition. Apart from that, equal participation has been uh, done by other category of students from institutions like engineering majorly. After that, art students have also participated, and I must tell you that the kind of entries, the kind of presentations they have submitted is beyond standards which I was imagining. So a very warm or many congratulations to the participants who have gone to that extent. And yes, this entry, I can assure you, will be equivalent to your semester graduation or semester knowledge which you will be attaining under your specific courses which you are going into this university. So before starting, would like to give us a brief, which we usually do in all the presentations, but do not get bored by this सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्स, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा नहीं हम क्या कर रहे हैं तो आपको हमारे तक पहुंचने में आपकी मदद करने के लिए या आप किस किस कैरियर को टारगेट करना चाहोगे थ्रू अस will be incomplete without telling exactly what we are doing and who we are. So you all might be knowing by now that competitive examination cell is an entity which is part of Parul University, and this has been envisioned to prepare our students, alumni, and even interested non-PU students for the coveted many government examinations, amongst which the primary ones are civil services and SSC banking and SEBI and many more examinations you can prepare along with your graduation with competitive examination cell. So here are few of the vacancies, or I would say few of the positions which are dreamt by many, but only few could dare to sit for these exams, and amongst them few only who have prepared for these exams thoroughly get through and get these coveted jobs as the various positions which I mentioned here. So what do we offer at CEC? Yes, we aware students about job opportunities in the government sector, and anybody who is keen to know about any of his interested area or any of the courses which we have started here, mentoring and assistance is available for those. उसके बाद कोचिंग जो कई लोग शायद ले रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल ड्रॉप करके लेंगे लाखों के दाम पे, वो यहाँ पे आपको जस्ट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट विल बी अवेलेबल टू यू. उसके अलावा ऑल द स्टडी मटेरियल विल बी अवेल टू यू विद इन द competitive examination cell. So recently we have introduced a course. So related to that course, we have launched the competition semester. So this course is about SEBI officer grade A manager exam. So if you will go into hierarchy of SEBI, so as an officer you start at the earliest level as an A grade officer, which is equivalent to assistant manager, and then you can go on to become chairman, so which is the highest available position into the SEBI. So this is a very professional organization where your entries will not be stopped if you are performing exceptionally well. And nowadays, as you might have seen, suddenly there is a spurt of entrepreneurs in India. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें कई सारे एंटरप्रेन्योर्स पिक्चर में आ रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं. And you might be seeing that yesterday they have opened a company and tomorrow it is going on to become unicorn, that is a worth $1 billion company. And there are exceptions who have increased their valuations beyond 1 billion to many more billions.
So amongst that spurt of entrepreneurs where everybody is seeking funds to manage their day-to-day functions for the newly established businesses, SEBI is the organization which approves their funding through IPOs, through stock market, through various other modes. So nowadays, SEBI is the one of the most, I must say, looked after organization by government, by bureaucracy, and by everybody. क्योंकि as I have told in the initial slide itself कि share markets or stock markets are the barometer for any economy, and SEBI ensures that that barometer performs in a transparent manner. तो जो भी सारे IPOs आते हैं for funding purpose, for example the recent fiasco of Paytm, विजय शेखर राज शर्मा जी, उनके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं अभी. Unfortunately, his IPO didn't perform well, and recently he hit one of the IPS officer's car. So after that, he has spent a night or two in jail too. So that's not the domain of this presentation today, but rather to show you कि SEBI how actively it is engaging nowadays with all the stakeholders of this ecosystem of entrepreneurs to maintain a transparency कि जो रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में है उनको फ़ायदा रहे, और जो कंपनीज हैं जो डिमांड कर, जिनको ज़रूरत है पैसे की, उनको ज़रूरत के टाइम पे पैसा मिले, so that our economy can boom. So this course we have launched very recently, and I must say that this is an exceptional kind of course where many of you might be targeting salaries of lakhs. So here you can get it easily with a secured career. आपकी लाख रुपए से ऊपर सैलरी होगी, और eligibility for this course is PG. Mostly all the masters, चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर से हैं. So it is not the domain of finance people only or the management graduates only, but rather all the management graduates can participate into this course, and they can equally crack this examination with the thorough preparation which we are giving it to the aspirants in competitive examination cell for this course. So anyone can participate into this course. किसी को अगर ये भ्रांति है कि ये फाइनेंस का है फील्ड, सेबी वेबी, कुछ ऐसा नहीं है. With general reading you can be thoroughly prepared for this examination. 3 से 4 महीने का कोर्स है, where we will ensure that yes you are prepared for this course aptly. और उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट्स इन इंजीनियरिंग एंड लॉ, दे आर ऑल्सो एलिजिबल. दो ही ग्रेजुएशन वाले स्ट्रीम्स हैं, एक इंजीनियरिंग, एनी इंजीनियरिंग एंड लॉ. सो दीज टू ग्रेजुएट्स एंड ऑल अदर मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू fill the form for this exam and participate in this exam. So duration of our course, as I've already told, 3 to 4 months. Fees is just almost less than half of which they are charging in the market. It's just 10,000, and study material will be provided to you in soft copies. Online, offline classes, both modes are available. Flexible timings. We will not at all hamper your regular studies. अगर आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, so we will manage your time so that you can participate in your regular classes, और उसके बाद जो भी आपके एग्जाम्स हैं, so nothing will be hampered. And mock test will ensure, क्योंकि mock test is the foundation for these exams. These are computer based exams. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जितनी भी प्रिपरेशन कर लो, at that point of time where spontaneity will be put test to, you might not be able to sail through this exam. So mock tests, yes, they are integral part of this course. So here is the glimpse of the features of this course. Eligibility is there, so less than 30, more than 21. Anybody can apply till any number of attempts in this age bracket. So yes, here's the building, iconic building of SEBI. Here is the big bull of markets, which have grabbed the attention of students towards stock market, but not in positive direction. So positive direction to your hopes and dreams we will be providing it through this course. तो आप लोग एक गलत आदमी ना बन के एक अच्छे से भी A grade ऑफिसर बन के you will be
entered into SEBI. So apart from a glimpse, apart from the SEBI course, few of our courses are civil services course. So there are various course, 3 महीने का, 6 महीने का, and year-long course for civil services, where we will be covering comprehensive course for this exam. Here are few of the testimonials of our earlier students, so you can come to know. And anybody, many of the students who are preparing on their own for these exams, so they can subscribe to our test series. Prelims, mains, both test series are available here at fractions of cost compared to the outside coaching markets. उसके अलावा SSC का कोर्स हमने स्टार्ट किए हैं, उसमें कई सारे बच्चे हमारे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसके लिए, एंड बैंकिंग ऑल्सो. And apart from that, few of our initiatives are PU Vishesh, which you might have seen daily into your mails, and surely must not have read that. So PU Vishesh is a daily magazine which we have now changed our platform to Instagram and Facebook rather than putting it daily through your mails, because we were getting many spams. So Google रोक दे, उससे पहले हमने platform change कर दी. Instagram पे we are putting it on daily basis. And apart from that, here is our monthly current affairs magazine, and the domain or the limit of this PU Sankshipt will not be limited to current affairs only, but we will be subjecting you to the exhaustive coverage of the current issues in question answer manner, which all the aspirants who are preparing for government exams can come to know. कि भाई जब तक आपको करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में नहीं पता है, जब तक आप उसको स्टैटिक पोर्शन, जो आपका कन्वेंशनल पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, सो मेनी implications have been there which you are unable to relate to our day-to-day economy or any other thing, which you can be easily able to relate to after reading Sankshipt in a comprehensive manner. तो आपको वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में readily आपके पास रहेगा. So not alone for government exams, but rather if you are going for any interview, GD, debate, roadies, आप कहीं भी जा रहे हो, you will be updated with the current affairs in question answer form. So yes, your knowledge will be exponentially multiplied. So Sebister, here's a glimpse of our initial poster which we have circulated, and I request all of you who are interested or who could not have came to know about this opportunity earlier, surely must participate within further 2 more days, and shall submit their entries within further next 2 more days, so that we can finalize the winner in the actual competition, which is going to be held on Monday, next Monday or Tuesday. Exact dates will be available in the Google form. Again, we'll be circulating it today in your mails. So what is Sebister exactly? Many students, even after participating into this competition, had a few of the queries कि सर इसमें लिखना कैसे है, करना क्या है, and other students who were keen to know कि भाई ये Sebister actually है क्या है. Here is a glimpse, here is a gist for you. Already we are a bit late. Because of technical glitches we have started the session bit late. So मैं थोड़ा brief में ही आपको overview दूंगा कि ये competition है क्या, और इस competition में I must tell you the kind of entries which we have got, the kind of presentations which we have got. I never imagined those kind of entries, and again I'm eager to see those candidates who have submitted those entries, and would like to congratulate them for their financial acumen which they hold at such a young age. Their interest will surely take them to places, and I hope many of the participants will also acknowledge कि ये competition कैसे enhance कर रहा है participants की knowledge को. And there are many more benefits of participating into this competition, which again in mails you can surely see. So Sebister is a mega ideathon where all the participants are supposed to present ideas for any of the 3 case studies which we have given there. So a brief I will give about those case studies, though I have already got the entries, and we will wait for few more days for few more entries. But
Just to give you a glimpse कि ये पूरे competition में है क्या, I'll present you the brief of the case studies. So cases into consideration were three. One is which you all are fascinated from by the recent web series Scam 1992, Harshad Mehta story, a very famous web series, and our brand ambassador is the protagonist here into this web series. Yes, his acting skills are exceptional, but surely I would not like to see anybody as the next Harshad Mehta because of the obvious reasons you all know. And the people who have tried to stop these scams were SEBI people and the SEBI A-grade officers. For sure, many of you might be knowing that after this scam that came into prominence and it got established after this scam, SEBI. But prior to that, we must appreciate the spirit of those officers जो इन सारी टेक्निकल लो हाउस के अंदर तक गए, छानबीन करी, एंड विद फुल details they have grabbed this big Bachchan of the markets of those times. So Harshad Mehta scam, what he did was that he manipulated BSE in 1992. You all might be knowing कि उस टाइम पे सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था. आज के डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द अल्टरनेटिव एंड which has gained the prominence which BSE used to have at those times. So इन्होंने BSE को मैनिपुलेट किया था, जहाँ पे इन्होंने इनके स्कैम की अगर वर्थ नापी जाए तो 2000 से 4000 करोड़ तक इनके स्कैम की वर्थ है. You all can relate to this amount if you will. अगर किसी ने अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि भाई उस टाइम में 25 पैसे का आटा मिला करता था, 1 रुपये का घी मिला करता था, तो दिस स्कैम वुड हैव बीन now exponential in these times. But उस टाइम में 2 से 4000 करोड़ का स्कैम था, which was a huge amount. और हर्षद मेहता ने किया क्या था, उन्होंने स्टॉक मार्केट में जो किया, but his modus operandi was linked to the banking system. तो बैंक उस टाइम पे क्या करते थे कि ओवरनाइट किसी को अगर लोन लेना होता था तो बैंक्स यूज्ड टू collude with each other. Not collude is a negative term. They used to interact with each other and they used to maintain one ratio which is called as SLR or CRR, which finance graduates can relate to. तो वहाँ पे उनको एक रेशियो मेंटेन करना था where RBI was ensuring कि कभी भी कोई ऐसी बैंक रन की सिचुएशन आती है तो वो बैंक्स के पास इतना पैसा रहे कि उस स्टेट में वो जो भी बैंक के पास आए उनको पैसा दे सके. तो उसके लिए एक रिजर्व अमाउंट रखना पड़ता था. उस रिजर्व अमाउंट को रखने के लिए रिसिप्ट्स वगैरह भी चला करती थी. किसी के पास रिजर्व अमाउंट नहीं है तो वो रिसिप्ट ओवरनाइट दिखा के कि मेरे पास ये पैसा आने वाला है, तो यू कैन बी श्योर्ड, RBI कैन बी एश्योर्ड कि मेरे पास पैसा आज नहीं तो कल है. एंड in the case of bank runs, I can assure the payment to the depositors. So हर्षद मेहता क्या करते थे, वो बैंक से पैसा लेके, जो पैसा उनके पास रिजर्व में रहना चाहिए था, वो बैंक से पैसा लेके उनको रिसिप्ट दिया करते थे और वो रिसिप्ट वो RBI को दिखा दिया करते थे. बट दैट मनी when it will come back, that was not sure. I hope you all have seen the web series. So वहीं पे वो फंसे. तो जब वो पैसा वापस करने की बारी आई, उनके पास वो पैसा नहीं था. इट वॉज ऑलरेडी ब्लॉक्ड इन टू द मार्केट्स एंड वेयर द स्काई रॉकेटेड शेयर्स गॉट टम्बल्ड ओवरनाइट और वहाँ उनका पैसा ब्लॉक हुआ. तो वहाँ पे वो फंसे. सो दिस वॉज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द स्कैम एंड मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव रिटन अबाउट दिस स्कैम वेयर दे वर सपोज टू एक्ट एज द SEBI A-grade मैनेजर. कि अगर वो उस टाइम पे अगर SEBI रहा होता और उसके वो मैनेजर रहे होते तो हर्षद मेहता को रोकने के लिए वो क्या करते. तो वेरियस एक्सेप्शनल एंट्रीज हैव बीन सबमिटेड एंड आई होप मैनी ऑफ यू विल विटनेस आवर एक्चुअल प्रेजेंटेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल प्रेजेंट, द विनर्स विल प्रेजेंट देयर एंट्रीज इनटू दैट event, final event of this semester. So people started looking up to the big bull of the market
हर्षद मेहता, कैसे उन्होंने लेक्सस खरीदी, सब जानते हैं। तो ये सारे स्कैम को जब रोका गया, तो जैसा उस टाइम से भी नहीं था, तो जब इनकम उनकी नापी गई तो उसके अगेंस्ट में वो टैक्स वगैरह नहीं भर रहे थे, तो दैट्स हाउ टैक्स डिपार्टमेंट गॉट हुक ऑन टू हर्षद मेहता, और उसके बाद ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ 74 criminal offences. So this is the gist of Harshad Mehta's story, and many of the students have submitted entry for Harshad Mehta, but the next look out for the producers of the movies or the directors of the movies is story which is doing rounds in the stock market of Ketan Parekh. So इसके ऊपर भी 2 एंट्रीज, बहुत एक्सेप्शनल एंट्रीज आई हैं, एंड विच वर आर फर्स्ट एंट्रीज फॉर दिस कंपटीशन. वेरी एक्सेप्शनल स्टोरी. The task for the semester competition for this case study was the students have to submit their entries into a film script where they are supposed to give origin and the stakeholders of the scam. तो केतन पारेख के अलावा भी कई सारे लोग थे, तो उनकी एक जिस्ट देनी थी. Many of the students have given exceptional overview of this story, and which could be a look, I must say that which would be a lookout for the producer and directors after this competition. भाई हमसे पहले किसने इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिख दी केतन पारेख के ऊपर. So next web series writer will surely be from this scam, from this semester competition. So exceptional entries you will see on the finale. But again, any of you who are still wondering कि ये scam क्या था, here's a gist for you for this case study. So he was a trainee of Harshad Mehta. Yes, उस वेब सीरीज में कहीं भी जिक्र नहीं था, बिकॉज जो भी प्रोड्यूसर रहे होंगे वो चाहते होंगे भाई इनके बारे में ना बता के इनको अगली पिक्चर में दिखाएंगे. सो इनके पूरे स्कैम में इनका एक खुद का लूप चला करता था, सर्किट चला करता था, विच वॉज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ ब्रोकर्स, और ट्रेडिंग रिंग जिसको कहते थे उस टाइम पे. तो इनके कुछ अपने खास ट्रेडर्स थे, 8 से 10 ट्रेडर. तो 1 ट्रेडर, 2 ट्रेडर, 3 ट्रेडर, तो जिस अमाउंट की वो वॉल्यूम जनरेट होती थी, दैट वाज द मेन बेसिस फॉर दैट स्कैम ड्यूरिंग दैट टाइम. सो इन्होंने खुद की इंटरनल रिंग, ट्रेडिंग रिंग बनाई. तो उस ट्रेडिंग रिंग में क्या होता था, ये आपस में ही एक दूसरे के ऑर्डर मैच किया करते थे. फॉर एग्जांपल केतन पारेख ने अगर एक ऑर्डर लगाया किसी, और आई वुड से इफ ही हैज बिडेड फॉर एनी ऑफ द नीड ऑफ द कॉर्पोरेट्स, कि कॉर्पोरेट बोले कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो पैसा उसका स्टॉक मार्केट खरीद के ये लिया करते थे. फिर सेकेंडरी कोई बायर आता था, उसके लिए एक नेक्स्ट ब्रोकर होता था जो इनके जो ऑर्डर लगाए हैं उसके अगेंस्ट में फिर वो ऑर्डर लगाते थे. तो मैनी ऑफ यू माइट बी I would say unable to correlate with whatever I am saying, but after this gist, if you will go back again to Google, to your laptops, you will find out, or you will find it very easy अगर आप dig out करना चाहेंगे कि actual story क्या थी. So that's why this gist will help you out, and this will also help you out to understand our final on the day which I have already declared. तो वहाँ पे भी आपको वो फिनाले देखने में मज़ा आएगा जब आप ये जिस्ट को जानेंगे. एंड पार्टिसिपेंट्स, यू आर मोर देन वेलकम अगर आप अभी भी एंट्री सबमिट करना चाहते हैं ये सब समझने के बाद. सो इन्होंने खुद की ट्रेडिंग रिंग एक चालू करी, और उसके बाद एक नेटवर्क बनाया ब्रोकर्स का, और उन्होंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जिसके 10 भी बोला करते थे उस टाइम पे. सो दी स्टॉक्स वर द फेवरेट ऑफ केतन पारेख. तो इन्होंने उन स्टॉक्स को इन्फ्लेट करके उनको मल्टीफ्लोड इंक्रीज करवाया. अगेन ये सारा पैसा कहाँ से लेके आते थे? सो बदला सिस्टम वाज प्रेवलेंट दोज टाइम्स. सो बदला सिस्टम वाज नथिंग बट टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स थ्रू मिस्चीवियस मीन्स. सो कुछ नहीं था, बदला सिस्टम वाज टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स थ्रू मिस्चीवियस मीन्स, विच इफ यू विल रिलेट टू द हर्षद मेहता स्कैम, वो भी किया करते थे, बट उनका तरीका दूसरा था. इनका तरीका थोड़ा लीगल तरीके से था, बट अगेन विच वाज नॉट लीगल तरीके से होने के बाद भी इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी. तो सॉर्ट ऑफ इलीगल लूप होल इन्होंने फाइंड आउट किए, और दैट्स हाउ ही यूज्ड टू फाइनेंस हिज
trades where he used to inflate the shares of the K10 identified 10 stocks. तो ये कम दाम पे खरीदते थे शेयर्स को और उनके प्राइस को तब तक बिड करते रहते थे जब तक कि वो एक लेवल पे ना पहुंच जाए जहां पे उनको सबको फायदा हो रहा होता था। और वहां पे जाके फिर क्या करते थे, मान लो कोई 27 रुपए का शेयर है और वो 4,000 रुपए तक बढ़ गया, तो 4,000 रुपए जब इनको मिलते थे शेयर को, वहां पे वो बेचना स्टार्ट करते थे। तो हिज होल और रादर हर्षद मेहता एंड केतन पारेख, they both were operating through one, if I have to give one statement for both of their scams, it was nothing but pump and dump scheme, which all of you might be knowing after so many movies are circulating in the market. Big Wolf, क्या है, Wolf of Wall Street and uh, Big Shots and Bazaar. Indian market की अगर आप बात करें तो Bazaar is a movie and recently this Harshad Mehta. So everybody was doing the same thing. आप पहले स्टॉक्स को इतना इन्फ्लेट करो जहाँ पे हर किसी को लालच आए कि वो खरीदे तो मेरा भी ऊपर जाए, और जब सबने खरीद के उसको आपको प्राइस को इतना पहुँचा दिया कि आप वहाँ पे एकदम करोड़पति बन जाओ, वहाँ से आप बेचना स्टार्ट कर दो। सो ही यूज्ड 2 banks फॉर हिज फंडिंग ऑफ ऑल these inflated shares. One was small HMD based bank called as MMCB, which was a cooperative bank, and he finally got arrested into 2001 for defrauding Bank of India. तो बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने काफ़ी सारा पैसा उठाया था। सो 2 बैंक्स मेजरली इनके मोडस ऑपरेंडी के लिए यूज़ हुआ करते थे। तो 2 बैंक में से एक से तो काम चलता रहा था, बट दूसरे में इनका पैसा फंस गया या फिर ये वापस नहीं कर पाए, तो वहाँ जाके ये बुक्स पे आए सेबी के। सो फाइनली ही गॉट अरेस्टेड इन 2001. And last but not the least, this was our third case study, which is doing rounds in our recent newspapers. कि आपने आज तक पे देखा होगा, आपने जी टीवी पे देखा होगा, कौन था वो हिमालयन बाबा जो दिया करता था राय हमारे एनएसई चेयरमैन को। सो चित्रा रामाकृष्णन, she was the chairman during 2013 to 2016 for National Stock Exchange, and she was a very bright lady, I must say. इसके पीछे, इस पूरे स्कैम के पीछे, दो आई विल नॉट कॉल इट एज अ स्कैम, रादर इट वाज हर ब्लाइंड फेथ इनटू द गॉडली एडवाइसेस ऑफ दैट बाबा व्हिच लेड और व्हिच डूम्ड हर। तो ये कोई पर्सनल मोटिव, जैसा उन्होंने क्लेम किया कि मैं पर्सनल मोटिव के लिए नहीं करती थी, आई वाज डूइंग इट फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस, बट अगेन द मनी व्हिच वाज blocked there into the stock market is of retailers, is of common people. So every stakeholder who is involved into this is accountable, and recently she have got jailed for this too. So there was a Baba who used to do mails to her and used to look after the appointments of the National Stock Exchange. तो जो भी influential stock exchange के appointments थे उसको influence करते थे बाबा। So this Baba nowadays, now not anymore, he is a hidden Baba. Many journalists and TV channels are claiming that one of the appointees of Chitra Ramakrishnan is the Baba himself, और वो ही उनको किसी hidden मेल के थ्रू इनको डायरेक्ट किया करते थे कि आपको अभी ये करना है, आपको अभी वो करना है। सो व्हाट शी डिड इज कि उन्होंने वो बाबा की एडवाइस पे कुछ ब्रोकर्स को अपने एनएसई के कंपाउंड में जगह दी, उनके सर्वर्स को जगह दी। तो वहाँ पे सर्वर रखने से क्या होता है, यू ऑल कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे गुप्त, मतलब ऐसे हिडियस प्लेसेस पे चले जाते हो जहाँ पे जाके आपके सिग्नल टावर नहीं आते हैं फ़ोन के, और आप कभी ऐसी जहाँ पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ पे आपके टावर एकदम फुल फ्लेज आते हैं। सो दिस वाज द सेम काइंड ऑफ स्कैम। सो शी अलाउड सर्वर्स इनटू द प्रेमाइसेस ऑफ एनएसई। तो वहाँ पे उनको फीड जल्दी मिला करते थे कि कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है। सो वो फीड लेके वो ब्रोकर उसको इलिसिट एडवांटेज ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स उस पर यूज़ किया करते थे, और वहाँ पे वो जल्दी ऑर्डर लगाया करते थे और जल्दी उनको वो स्टॉक्स मिल जाया करते थे। So that's how they
got undue advantage by buying or selling early in the stock markets. Or you all know that how seconds matter in the stock market. You might have seen the fascinating screens of the ट्रेडर्स ब्रोकर्स, जहाँ पे नंबर कैसे फ्लैश करते हैं विद इन सेकेंड्स, करोड़ ऊपर नीचे होते हैं. सो स्प्लिट सेकंड फास्टर एक्सेस मिलने से सारे ब्रोकर्स जो भी एनएससी में सर्वर लगाए बैठे थे उनको करोड़ों का फायदा होता था. तो सूनर एक्सेस इज कंसिडर्ड रिजल्ट इन ह्यूज गेन्स फॉर अ ट्रेडर. तो सेबी ने फाइंड किया कि भाई जो अननोन पर्सन है हिमालयन योगी, उसने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया है डिसीजन मेकिंग ऑफ चित्रा रामाकृष्णा, who was chairman and MD at that time, and because of which SEBI, as I've said, SEBI is the more active organization nowadays as a regulator. SEBI कई सारे स्कैम्स को पकड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल आफ्टर दिस स्कैम, SEBI ने डायरेक्ट किया कि MD CEO दो पोजीशन होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डे टू डे फंक्शन देखता है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लुक्स आफ्टर द होल बोर्ड, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठते हैं और कंपनी के डायरेक्टर भी बैठते हैं. तो उनको इन्फ्लुएंस आराम से कर सकता है एमडी. तो अगर डे टू डे फंक्शन वाला आदमी एमडी भी रहता है तो वो अनड्यू एडवांटेज रहता है उसका बोर्ड के ऊपर. तो वहाँ कैसा भी प्रस्ताव पारित करवाना हो तो सीईओ बोलेगा बीइंग अ एमडी कि आप पारित करो, तो वो पारित कर देंगे. तो दिस बिकॉज ऑफ दिस सेबी हैज़ floated guidelines, not floated, SEBI has mandated कि जो भी organization है, rather it is private or PSU, they both have to have independent MD and CEO. वो दोनों एक पर्सन नहीं हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं. एंड रिसेंटली आफ्टर लॉट ऑफ फ्यूरोर कि भाई ये PSUs में आप कर सकते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करना लाजमी नहीं है. रीज़न इज कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रन बाय फैमिली और डिनेस्टीज. तो वहाँ पे वो कुछ भी बन सकता है. वो हु इज सेबी टू से कि हाउ यू शुड मैनेज योर डे टू डे बिजनेस. सो आफ्टर दैट सेबी हैज टोल्ड कि ओके, इट इज नॉट फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बट रादर PSUs. So PSUs now shall have independent MD and independent CEO, so that CEO unnecessarily cannot influence the decision of MD in day-to-day businesses. So this is these were the 3 case studies, and majority of the students, though it is a spoiler for all of you, but majority of students have chosen Harshad Mehta scam. Yes, because it was into the limelight, और हम सबको limelight पसंद आती है, और that's why they have targeted this. But the participants who have chosen other 2 case studies, they have also written exceptionally well, and their presentations are worth seeing on the day of our grand finale, which is on 27. Again, we will float the mails to you so that you can participate into this competition, or at least you can witness the grand finale of ours, where we will be rewarding or awarding our participants and the finalists into that grand finale event. So anybody, many students do come to us after our sessions into the classes. They do come to us कि सर हमको पता ही नहीं है, पहले आप मेडिकल में बैठते थे, अभी आप कहाँ चले गए. So my humble request to you, this is a forum where I can announce it universally. क्लास टू क्लास जाता हूँ तो आधे बच्चे सोते हैं, आधे बच्चे गायब रहते हैं, तो पता नहीं लग पाता उनको वहाँ पे कि हमारा ऑफिस चेंज हो गया है. It has now been changed to new agriculture college building, which is also known as सुभाष चंद्र बोस भवन. तो यहाँ पे हम रूम नंबर 122 में हमारा ऑफिस है अभी ग्राउंड फ्लोर पे. एंड इफ एनीबडी इज अनेबल टू विजिट अस, they can directly give us a call 9328920063. So yes, you are most welcome. If you are having any query regarding any course of ours, or if you want to enroll into our courses, or if you are having any query about this particular competition known as Semester, so I encourage all of you to participate into this semester with all your efforts, all your wisdom, and I hail the enthusiasm which all the participants have displayed till now.
and you are most welcome for any of the queries to us. Please take a screenshot of this page so that you can contact us anytime, and for anything I am easily accessible to you all. So now I would like to conclude my presentation here regarding this semester, though the time is still remaining, but I have conveyed our I have conveyed the gist of these three case studies. So, though I am giving undue advantage to the upcoming participants for this competition, because earlier we have hardly told to anybody about these case studies कि क्या है क्या नहीं है. All entries were or all the submissions uh, have to be built on your understanding only earlier, but now you have a basic idea कि क्या करना है, क्या इस competition में होना है. And as far as the rewards for this competition are concerned, you all will be acknowledged for your efforts for this competition. So finalists, uh, the three finalist teams who will be presenting their entries onto the grand finale, they will be given 50% of scholarship for our SEBI A grade manager course. So yes, which is nothing. And for more than 90% of our of their attendance, we will be keeping some refund also. So almost this course will be costing nothing to the finalists. So I encourage lots of participation. Everybody must participate into this. If you are winning or not, that is altogether different story. But yes, you will surely put test your financial interest in through this competition. So you all are most welcome to the grand finale of semester and to our course SEBI A grade manager. Anybody who's interested can note down our contact details. This is it from my side. Thank you everyone for your participation. Anybody who is still here into this क्या कहते हैं, into this webinar, so would like to tell few things, the common doubts about the course of SEBI Officer A grade manager. Many of the students, they have come to us, inquired about this course, and they are apprehensive of few things which I would like to make clear here. कुछ लोग मेरे पास आए और पूछे कि भाई इस एग्ज़ाम में एनरोल करके what is the eligibility for this exam. So yes, the eligibility is masters mainly, but graduates, as I've told, graduate, undergraduate of engineering and law can also participate or are also eligible for this exam. तो ऐसा नहीं है कि आप जब एलिजिबल होगे तभी आप तैयारी करने बैठोगे, बिकॉज द ट्रेंड इन इंडिया जनरली इज रिवर्स. आप सब कुछ कर लेते हो अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आपको लगता है कि यार मुझे कुछ अब एक्सेप्शनल करना है, उसके लिए मुझे 1-2 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा, विच अगेन इज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज फॉर योर कैरियर्स. क्योंकि 1-2 साल अगर आप खाली बैठते हो एंड इफ अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट गेट द गुड गाइडेंस for your dream jobs like SEBI officer or civil services, IAS, IPS, कुछ भी आप बनना चाहते हो, 1-2 साल अगर आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली और आप नहीं हो पाए, तो आपका 1-2 साल में फिर ब्रेक लगने की वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी जाना मुश्किल हो जाता है. सो रीज़न is this that we have started this course and we are encouraging even first year students also for this course. तो कोई बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है कि मुझे इसी सेक्टर में जाना है, no time is appropriate time. Every opportunity should be harnessed by every candidate. This is what we at Competitive Examination Cell believes. क्योंकि जब तक आप एलिजिबल होगे तब तक शायद आपकी कैपेबिलिटी might be put to doubt. तो though this shall not happen with anyone, so that's why you should subscribe to this course or any of the course with us, or whatever you want to do. You should do it at the earliest stage. जब आपका मन बने तभी आपको उसको करना है, ना कि वेट करना है. क्योंकि जब आप और एलिजिबिलिटी का जब आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को देंगे, बट इन फैक्ट इन योर प्री फाइनल ईयर्स ऑल्सो यू कैन सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन.
बाय द टाइम यू विल बी ग्रेजुएटिंग आउट, तब तक आपके रिजल्ट वगैरह सब आ जाएंगे. सो यस, आप जब पास आउट होंगे, so not only you will be eligible but you will be getting a grade job into your hands where the salary is more than 1 lakh. और कई लोगों ने पूछा है कि भाई ये ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा. सो दिस कोर्स अगेन इज आर प्रेफर्ड मोड इज ऑफलाइन, बट अगर बच्चे the majority of the batch says कि ऑनलाइन होना है, so yes we can do it, make it a weekend course. We have all kind of provision. So whatever we are teaching offline will be streamed live too, or fully online stream is also available. So all the kind of options are available, and in fact we will be giving you due breaks for your examinations too. तो आपको उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने अभी किया तो 3 से 4 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं. All things have been accounted for this course. So कोई भी अगर कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए किसी और एग्ज़ाम के लिए आना चाहता है और क्या कुछ पूछना चाहता है, shall subscribe to CC contact desk. So this is it for today. Thank you everyone. Good day.